सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। आज ये टॉपिक है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हम जानेंगे व्हाट इज इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट इन व्हिच देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर इन ए केमिकल रिएक्शन। हमारे इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता है टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर का, एंड दैट स्टेज ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम. So further we know in equilibrium the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. इक्विलिब्रियम होता क्या कि हमारा जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जितना क्रिएट होगा उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दो बार क्रिएट होता है. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन equal to the rate of backward reaction. So and then ionic equilibrium. So what is ionic equilibrium? It is that type of equilibrium which deals with the ionic reaction. So ionic equilibrium is that type of equilibrium state which deals with the ionic reactions. Ionic reaction is that reaction in which ionization occurs. So what is ionic reaction? Ionic reaction is that type of reaction in which ionization occurs. Then question आता है what is ionization? Ionization is a process in which the molecules breaks into different ions in an electrolyte solution. हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल डिफरेंट आयन्स में कन्वर्ट होता है. एक पॉजिटिव आयन और दूसरा होता है नेगेटिव आयन. लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ एन मॉलिक्यूल Ab which is added in an electrolyte. If Ab is added in an electrolyte, then it splits into two ions, A plus and B minus. AB equilibrium A plus B minus. So rate of ionization of unionized molecule is equal to rate of combination of ions in an equilibrium state. In an equilibrium state, the rate of ionization takes place in case of Ab, and the combination takes place in case of A plus B minus. In the reactant side, the ionization takes place, and the product side, the combination takes place. And in this equilibrium state, the rate of ionization of unionized molecule means Ab का ionization होगा, उसका रेट A plus B minus का combination का साथ इक्वल होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में. So now we will discuss about what are electrolytes. So when we added a molecule into polar solvent, then it splits into different ions. That solution is known as electrolyte solution. हम अगर एक मॉलिक्यूल को पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर पे डालते हैं, वो डिफरेंट आयन में अगर स्प्लिट होता है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. सो इट इज ए सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग सॉल्यूशन व्हेन एडेड टू वाटर. वेयर let Ab is added to water, then it splits into A plus and B minus, and this will help to conduct the electricity through the solution. So the electrolyte solution is a good conductor of electricity. Electrolyte solution should be a good conductor of electricity. That is, electricity must pass through the electrolytes. I will consider an example of NaCl. When we add some NaCl in water, it splits into Na plus ion and Cl minus ion, and this Na plus ion and Cl minus helps to conduct the electricity through the NaCl solution. So next we will define the classifications of electrolyte solutions. Now we will discuss about the classification of electrolyte solutions. The electrolyte solutions are classified into three types: strong electrolyte, weak electrolyte, and moderate electrolyte. So first of all, what is strong electrolyte? From the name we can understand strong electrolyte means the power of ionization of that molecule should be high. So they are electrolyte which ionize completely by the dissociation when it dissolves in water. यहाँ पे आयोनाइजेशन का परसेंट लगभग 100% होता है, और द आयोनाइजेशन इट completely ionization all the molecules and all the molecules of by the process of dissociation
it dissolves in water and it forms all the ions. A strong electrolyte present in a solution almost exclusively as ions. अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देते हैं एक पोलर सॉल्वेंट पे, देन इट स्प्लिट्स इन ऑल द आयन. सो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन ए solution as ions. Then strong electrolyte solutions are good conductor for electricity because देखिए हमारा होता है क्या, फिर हमारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा हमारा आयंस प्रोड्यूस करता है. अगर ज़्यादा आयंस प्रोडक्ट होंगे तो उनका कंडक्टिविटी बढ़ेगा. सो द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर good conductors of electricity. The examples of some strong electrolytes are strong acid and strong base. And the examples of strong acid is the hydrochloric acid, HCl, HNO3 and etc. And the strong bases are hydroxyl methyl of group 1 and 2 alkane except lithium and beryllium. हमारा जो हाइड्रोक्साइल मेटल्स है ग्रुप 1 एंड 2 का, उनका अल्कालाइन, उनका जो अल्कालाइन, लेकिन ये लिथियम एंड बेरिलियम के बिना. क्यों लिथियम एंड बेरिलियम का हाइड्रोक्साइल हमारा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वो इसका रीज़न क्या है? द हाइड्रोक्साइड ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर नॉट स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड. ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन दे कैन फॉर्म आयंस. अगर वो आयन फॉर्म नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तो हो गए ना हो नॉन कंडक्टर. सो द और एग्जाम्पल इसका भी होता है कि आयोनिक सॉल्ट. आयोनिक सॉल्ट लाइक NaCl एंड CH3CONa. So then the second type of electrolytes is weak electrolytes. So what are weak electrolytes? These are the electrolytes which ionize into a very small or very little or neglecting amount when it dissolve in water. अगर एक weak electrolyte को हम वाटर में डालेंगे तो नेग्लेक्टली, अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स डालते हैं तो उनमें से 1 और 2 मॉलिक्यूल्स स्प्लिट्स इनटू आयंस, और 98 मॉलिक्यूल्स हमारा स्प्लिट नहीं होगा. इसका स्प्लिटिंग इनटू आयंस का कैपेसिटी लो है, उसलिए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है. डिफरेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व डिसोसिएटेड टू डिफरेंट एक्सटेंट. हमारा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हमारा डिफरेंट टाइप के एक्सटेंट. अगर एक में 100 में से 2 होता है तो दूसरे में 100 में से 3 मॉलिक्यूल स्प्लिट करते हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर वो आयंस कम ही क्रिएट कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कम ही होगी ना. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर वीक or poor conductor of electricity. Strong electrolytes are good conductor and weak electrolytes are poor conductor. Examples of weak electrolytes are weak acid, weak base and weak salts. Weak acid, example of weak acids are acetic acid, carbonic acid, HCl, CH3COH, etc. And the weak base is NH4OH, NH3, NHCO3 and the salt. Weak salt, example of weak salt are AgCl and AgCl2. Now we'll discuss about the moderate electrolyte. Now we'll discuss about the moderate electrolyte. Such electrolyte ionize to a little extent and their degrees of ionization lies in between weak and strong electrolyte. हमारा ये इसका इलेक्ट्रोलाइट पावर वीक से ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग से कम है, लेकिन ये हमारा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है. इट इज़ अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज it have more covalent character. If there have more covalent character, so there will be no formation of ions. अगर ions फॉर्म नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसा करेगा? तो इस वजह से मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट्स आर bad conductors of electricity. We have to remember that strong electrolytes are strong conductor, weak electrolytes are poor conductor, and moderate electrolytes are bad conductor of electricity. The examples of moderate electrolytes are alcohol, H2O2, etc. So this is all about today's topics. What is equilibrium? What is electrolytes? Different types of electrolytes. In the next topic we will discuss about the degrees of ionization. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे नहीं है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.